पाकिस्तान डेवलपमेंट फोरम का इजलास इस्लामाबाद में खत्म हो गया है। इजलास में शरीक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए अमरीका के खुसूसी नुमाइंदे रिचर्ड हॉलब्रूक ने हमारे नुमाइंदे वकास अजीम से खुसूसी बात की है। आइए देखते हैं। जी, इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के खुसूसी नुमाइंदे रिचर्ड हॉलब्रूक मौजूद हैं, जो आज पाकिस्तान डेवलपमेंट फोरम के इजलास में शरीक थे। उनसे हम बात करते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त जो इक़्तिसादी इस्लाहात के अमल से गुजर रहा है उसको वो किस तरह देखते हैं। थैंक यू सो मच हिज एक्सीलेंसी। My first question is regarding how do you see the Pakistan's economic reforms in this Pakistan Development Forum? Well, this is a very important meeting, this Pakistan Development Forum, and we heard very important speeches this morning from Prime Minister Gilani, Finance Minister Sheikh, members of the Asian Development Bank, the World Bank, the Japanese, and others. And we are here to help Pakistan with its own programs, and I was very impressed with what I heard this morning from the Pakistani governmental leadership. After the floods, the devastation, and war on terrorism, what do you think where Pakistan can reform its economy? Well, the Pakistan government has proposed some new revenue efforts, a flood-related surtax on wealthier people, a sales tax, and some other things. I don't want to get into domestic issues, but I think that raising revenue is very important. The international community will help, but we can't do it all. So I think Pakistan needs to raise its own revenue base. Thank you so much. You're welcome. जी, इस वक्त हमारे साथ अमेरिका की तरफ से जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के खुसूसी नुमाइंदे रिचर्ड हॉलब्रूक मौजूद थे। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान ने अगर अपनी मईशत में बेहतरी लानी है तो उसे रिफॉर्म जीएसटी, जिसका मतलब इस्लाहाती जीएसटी भी कहा जाता है, उसको लाना होगा ताकि उसकी मईशत में बेहतरी आए और उसे अपने वसाइल पर खड़ा होना होगा। जी, नाज़रीन, पाकिस्तान डेवलपमेंट फोरम का इजलास इस्लामाबाद में खत्म हो गया है। इस मौके पर इजलास में शरीक एशियाई तरक्याती बैंक के नायब सदर साओ ने भी हमारे नुमाइंदे वकास अजीम से बात की है। आइए वो भी देखते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एशियाई तरक्याती बैंक के वाइस प्रेसिडेंट जाओ, जो पाकिस्तान डेवलपमेंट फोरम में मौजूद थे, और उन्होंने एशियाई तरक्याती बैंक की तरफ से अपनी एक रिपोर्ट पेश की है जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को अगर अपनी मईशत बेहतर करनी है तो उसको पावर सेक्टर के साथ साथ जो दीगर सेक्टर्स हैं उनकी तरफ तवज्जो देना होगी। इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि पाकिस्तान अपनी मईशत में बेहतरी किस तरह ला सकता है। थैंक यू सो मच सर। My first question is regarding how do you see the Pakistan's reform project in power sectors? Well, first of all, let me say this, and ADB is very proud to be a partner with the Pakistani government to do whatever necessary to bring the energy sector into a sustainable developing path. Having said this, I think it's always necessary if a country would like to grow to identify bottlenecks. It appears that in Pakistan, transport, infrastructure, energy are still the main constraints for sustainable economic growth. So that's the strength of ADB, and we have had a long partnership with the government. And we are very happy that we take an important role in this energy sector reform. We feel that it's all very necessary, because if you don't create a right environment for investors to do more investment in the power sector, and if you don't do more to reduce the leak or loss of power in the transmission and distribution, and then money will be lost, and the energy will not be sufficient for economic growth, then who suffers would be eventually the people of Pakistan, the economy of Pakistan. So we feel that it is important that we engage in major reforms in the energy sector in a very positive way to provide a right environment for investors to do more, to invest more in the capacity, and to do more in transmission. How can Pakistan reform its energy sector, especially eliminating the subsidies that are providing gets right now?
Well, that's a long story. The subsidy has been there for a long time, and for whatever reason, good or bad, it's been the reality, and people are sort of happy with the current system. But looking ahead, if no price is paid for a reform like this, and then people will not expect to have 24 hours power supply every day, stable, and then the industries will not have sufficient power to develop, and small and medium enterprises will not grow. So, if you look at this from the angle of this, if you look at the issue from this angle, you will understand that unless you pay some price, you take the pain now, you will not get any sustainable growth in the future. So that's the decision, that's the determination. I think that should be the consensus of all the works of life, that we need to improve the energy situation in the country so that we can embark on a sustainable growth path. So that's a very key. My last question will be, after the flood crisis, what are the major concerns of ADP regarding in Pakistan in energy sector and other sectors, and what are the projects that you are carrying right now? I would not say major concern. I would say that our main commitment will still be working together with the government, all levels of government, state, provincial, federal, to work on infrastructure, to invest more in roads, water management, power transmissions, and in all these sectors, so that we can really bring potentials out of this vibrant country, and then we can develop with this strong support of infrastructure and energy. Thank you so much. Thank you. जी, इस वक्त हमारे साथ एशियाई तरक्याती बैंक के वाइस प्रेसिडेंट मौजूद थे, जिनका ये कहना था कि फ्लड के बाद एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तान में रोड और जो सड़कों की जो तबाही हुई है उसकी तरफ एक तरफ इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जबकि हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर में भी एशियाई तरक्याती बैंक काम कर रहा है। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान को अगर अपनी मईशत में बेहतरी लानी है तो जो इनर्जी सेक्टर की जो सब्सिडीज़ हैं उनको फौरी तौर पर एलिमिनेट कर रहा होगा, क्योंकि एक तरफ जहां पाकिस्तान में लोड शेडिंग का मसला है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान में जो लोड शेडिंग की बुनियादी वजह के बारे में उनका यह कहना था कि इसकी वजह एक तो सब्सिडीज़ हैं, दूसरा उसमें जो बहुत सारे लीकेजेस के साथ साथ जो लोग बिजली चोरी कर रहे हैं उनकी वजह से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा एनर्जी सेक्टर में रिफॉर्म करना पड़ेंगे। और एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तान के साथ इस वक्त इस कमिटमेंट को जारी रखे हुए है। जी नाज़रीन, CNBC पाकिस्तान पर खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।